moving on to next exercise, which is a vocabulary. So first question is, many fields have a specialized vocabulary. Identify specialized vocabulary related to medical field in the text. So आपको specialized word दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में आपने क्या लिखना है कि आपको क्या लगता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एंड देन थर्ड कॉलम में आपने उसका एक्चुअल मीनिंग लिखना है. सो फर्स्ट वर्ड इज़ स्क्रैप्स, जिसका मीनिंग है ब्रूजेस, जो कि मुझे लगता है, और एक्चुअल मीनिंग इसका है कट्स या स्क्रैचेस. देन सेकेंड वर्ड इज़ इन्फेक्शन, व्हाट आई थिंक इट मीन्स इज़ इन्फ्लेमेशन, एंड एक्चुअल में इसका मतलब है डिजीज़ कॉज्ड बाय जर्म्स. Third word is ointment. What I think it means is healing cream, and it actually means is a soft paste used in healing wounds. Bandage. What I think it means is covering for the wound, and it actually means is a strip of fabric used for covering for the wound. Then second last word is dressing. मुझे लगता है इसका मीनिंग है changeable bandage. इसका एक्चुअल में मीनिंग है प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द वुंड. लास्ट वर्ड इज़ स्टिचेस, जिसका मीनिंग मेरे अकॉर्डिंग है इनक्लोजमेंट्स ऑफ वुंड्स, और एक्चुअल में इसका मीनिंग है टू स्टिच द वुंड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कंप्लीट द मिसिंग लेटर इन द वर्ड्स बिलो टू मैच द मीनिंग ऑन द राइट. ऑल दीज वर्ड्स हैव प्रीफिक्स दिस. अब प्रीफिक्स क्या होता है? दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हर वर्ड के शुरू में आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रीअपेयर, रीअरेंज, रीराइट, इन वर्ड्स में जो री है वो प्रीफिक्स है, और कुछ लेटर्स होते हैं जो वर्ड के एंड पे आते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, इसमें MENT ये सफिक्स हैं. तो इसमें हम इस क्वेश्चन में प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, और कौन सा प्रीफिक्स? DIS, डिस लगेगा हर वर्ड में, जिसका मीनिंग होता है डिवॉइड. सो फर्स्ट वर्ड इज ब्लैंक, OCATE, जिसका मीनिंग है टू पुट आउट ऑफ प्लेस. तो ये होगा डिसलोकेट. सेकेंड वर्ड इज जिसका मीनिंग है टू बी अनहैप्पी, तो ये होगा डिससैटिस्फाइड. थर्ड वर्ड का मीनिंग है टू डाइवर्ट, तो ये होगा डिस्ट्रैक्ट. फोर्थ वर्ड इज़ टू एक्सक्लूड, सो ये वर्ड होगा डिसक्वालीफाई. फिफ्थ वर्ड इज़ टू डाउट, तो ये होगा disbelief. And sixth word is to reject, तो ये हो जाएगा disapprove. Moving on to next question, जिसमें है now use the above words in sentences. तो इन words के अब हमने sentences बनाने हैं, देख लेते हैं. First one is the football player dislocated his shoulder. Second one is she was dissatisfied with the job. Third word is just sit back and don't distract me. Fourth word is the lack of a good education might disqualify you from some jobs. Fifth is why should I disbelieve her story? Sixth is surely he must have known his father would disapprove of her.